Yes students, in last class we studied about history and cell theory. Okay, and we have seen that a single cell is independent and can perform its every function which are essential for survival. So today we have to discuss about general structure of cell. We know that in cell all the components of the cell are in a defined boundary, and that boundary is known as cell membrane. So this membrane is the covering of, we can say, all the living matter or the living things. All the things are present inside this living membrane, and this is known as cell membrane, or also known as plasma membrane. Okay, inside the plasma membrane then there is another structure, another membrane bound structure, that is known as nucleus. Now this cell membrane is act as covering and also help in transport of different substances both sides, that means inside the cell and outside the cell. This nucleus is the, we can say, coordinated center of cell which control all the activities of cell. Now the things present between this cell membrane in this nucleus is known as cytoplasm. In this cytoplasm there is, we can say, a fluid content, or we can say jelly-like content is there, and also some other structures, they are also membrane bound, are known as cell organelles. That means inside the membrane there is a nucleus, then cytoplasm, then different cell organelles. If we talk about plant cell, किसके बारे में बात करें? Plant cell के बारे में बात करें, then outside the plasma membrane there is another layer, or we can say covering, that is known as a cell wall. This cell wall is rigid and non-living. Okay, एक और सेल प्लांट की बात करें तो न्यूक्लियस साइड में आ जाएगा. So that means there is a cell wall, then there is a plasma membrane. Inside plasma membrane there is cytoplasm. Inside there is a nucleus, और nucleus के अंदर भी एक fluid substance है, that is known as a nucleoplasm. Plasm by denote to fluid-like structure. Okay, तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी? One is cell wall, then cell membrane, then cytoplasm, nucleus, and inside the nucleus nucleoplasm. In cytoplasm there are many membrane bound structures are known as cell organelles. Okay, now if we remove the different covers of the cell, then how it divide into different, we can see, structures or organization. So try to understand with the help of a table. Keep these things, general things, in your mind. So cell. If we talk about plant cell, then there are two components in plant cell. One is known as cell wall. If I remove the cell wall of the plant cell, the rest of content is known as protoplast.
is known as protoplast. That means plant cell without cell wall is known as protoplast, and this protoplast we also can say कि ये कोई एनिमल सेल जैसी है, because in animal cell there is no cell wall. So cell wall and protoplast. Protoplast means plant cell without a cell wall. Now this protoplast further we can say classify into two different things. One is known as cell membrane and other is प्रोटोप्लाज्म. जैसे ही सेल थी, सेल वॉल रिमूव करी तो बचा प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स मेनली, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म. इफ आई रिमूव द सेल मेम्ब्रेन तो वो बचेगा पीछे प्रोटोप्लाज्म. ओके, नाउ दिस प्रोटोप्लाज्म मेनली कंटेन टू टाइप ऑफ things. One is known as nucleus and other is known as cytoplasm. So that means protoplasm is the nucleus and cytoplasm. That means the content inside the cell membrane is a protoplasm and protoplasm contain nucleus and cytoplasm. और nucleus के अंदर होता है nucleoplasm. Okay, so this cytoplasm is further divided into cytosol and cell organelles. Cytoplasm is a fluid content of the cell, semi-solid or jelly-like substance है, in which some membrane bound structures are present known as cell organelles. अब उसको मैं निकाल दूं सेल ऑर्गेनेल को तो बाकी का जो सब्सटेंस है वो है साइटोसॉल. वी कैसे जैसे कस्टर्ड होता है, फ्रूट है, वो फ्रूट को बाहर निकालो तो कस्टर्ड में जो नीचे जो पार्ट बचता है वो हमारा क्या है, साइटोसॉल है. और बाकी जो सब्सटेंस है जैसे फ्रूट थे वो क्या है, डिफरेंट सेल है, ऑर्गेनेल्स है. नाउ प्लांट सेल, इफ आई रिमूव सेल वॉल देन इट विल बिकम प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट से सेल मेम्ब्रेन निकाल दूं तो बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस निकाल दूं तो बन जाएगा साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म से सेल ऑर्गेनेल निकाल दूं तो बन जाएगा साइटोसॉल. नाउ दीज आर द सेल ऑर्गेनेल, दैट मींस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. दैट मीन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स. सो there could be three different types of cell organelle. एक ऐसी हो सकती है that is single membrane bound, और ऐसी हो सकती है double membrane bound, और ऐसी हो सकती है membrane is absent. So that means some cell organelle with single membrane bound structure, some with double membrane bound structure, some with where these membranes are absent but they are cell organelle. जैसे for example we can say are endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome, vacuole, etc. Okay, 2-3 organelles are also there that we will study one by one in detail. When we talk about double membrane bound structure, then there are two organelles which are double membrane bound. One is known as mitochondria and second is plastis, or we can say chloroplast. Okay, they are double membrane bound organelle हैं. कुछ है जिन पे मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो उनमें से है वो है राइबोसोम, देन साइटोस्केलेटन एंड सेंट्रियोल. So these are the without membrane bound
सेल ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन मीन लिविंग मेम्ब्रेन हो, जिसका हम स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो दैट मीन सेल, सेल के क्या क्या कंटेंट है, सेल वॉल एंड प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। ऐसी क्या होती है, एनिमल सेल। इफ आई रिमूव द प्रोटोप्लास्ट कंटेन सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। इफ आई रिमूव सेल मेम्ब्रेन तो ये बचेगा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म है, देन साइटोप्लाज्म में साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल है। देन सेल ऑर्गेनेल could be single membrane bound, double membrane bound, and here the membrane is absent. Okay, so this we can say general classification of the different component or different compartment of cell. Okay, अब इसको दूसरे वे में देखो। Now see, this is the general cell structure of plant cell. This is the cell wall, then cell membrane, then cytoplasm, then nucleus, or here we can say cell organelle. Now, if I remove the cell wall, that means अगर मैं ये सेल वॉल रिमूव कर दूं, now this structure is known as, ये है, now this is protoplast. Okay, if I remove the cell membrane from protoplast like this, ओके तो इसमें बच गया साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, तो ये बन गया प्रोटोप्लाज्म। इफ आई रिमूव द न्यूक्लियस तो ये बन जाएगा हमारे पास साइटोप्लाज्म। ओके, इफ आई रिमूव ऑल द ऑर्गेनेल्स तो दैट मीन्स वो पार्ट है दैट इज साइटोसोल। ओके, तो अब देखो सेल क्या है, सेल मीन सेल वॉल प्लस प्रोटोप्लास्ट। तो फिर प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट मीन सेल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म। तो फिर प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियोप्लाज्म और वी कैन से न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लाज्म। साइटो मीन सेल, प्लाज्म मीन फ्लूइड। अगर मैं पूछूंगी साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म में हमारे पास साइटोसोल प्लस सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, आई होप नाउ दिस इज क्लियर। सो सेल मीन सेल वॉल प्लस प्रोटोप्लास्ट, एंड दिस प्रोटोप्लास्ट is also equal to animal cell. So cell wall plus protoplast, cell, protoplasm means cell membrane plus protoplasm, protoplasm means nucleoplasm, nucleus, and cytoplasm, cytosol plus cell organelles. Then cell organelles are, we can say, single membrane, double membrane, or membrane could be absent. Okay, तो ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर रहेगा सेल का। नाउ ईच एंड एवरी सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स की है, काइंड की है, एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी स्पेसिफिक फंक्शन। व्हाई नर्व सेल इज लॉन्ग, व्हाई एग इज ओवल इन शेप, और व्हाई वी कैन से द लूज सेल्स, व्हाई पैरेन्काइमा हैविंग द लूज सेल्स। ओके, व्हाई कॉरेन्काइमा आर थिकन फ्रॉम corner, so that means they are
perform a specific function, that's why they are like this. That means अगर इनकी बात करें तो loose है, तो that means air can easily diffuse among them. तो ये mesophyll cells हैं. Now see the types of cells. According to their arrangement of nuclear material or covering of nuclear material, there are two different types of cell. One is known as prokaryotic cell and other is known as eukaryotic cell. Here the word pro means we can say early and karyon mean nucleus. That means we can say there is a very prominent nucleus, and here U mean true and karyon mean nucleus. We can say here that means the genetic material the present inside the DNA, okay, is not covered by any membrane. So instead of nucleus, they having a structure that is known as nucleoid. But here the genetic material जो हमारा chromosome है, we can say genetic material is covered by nuclear membrane. तो वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर्ड होता है. तो दैट मीन दे पॉजेस ट्रू न्यूक्लियस. ओके, सो हियर देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and here the genetic material form a structure known as nucleoid, and here is the true nucleus. So very first difference between prokaryotic and eukaryotic, that presence or absence of nuclear membrane. Second is there are no cell organelle found in prokaryotic cell, but here cell organelle found in this cell. तो that means cell organelle क्या होती है कि there are many membrane bound structures present inside the cytoplasm of eukaryotic cell. That means many membrane bound structure जो किसमें प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स है, they are known as cell organelles. Such type of cell organelles are not found. Now see one organelle जैसे राइबोसोम है, this is the without membrane bound and present in both type of cell. Ribosome present in plant, we can say prokaryotic cell as well as a eukaryotic cell. The ribosome help in protein synthesis, and protein synthesis is very essential function for cell. तो ये है, but this is the we can say non-membrane bound है. Okay, so we can say कि membrane bound structures are not present in prokaryotic cell. So these are the two main difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Second thing we can say, like prokaryotic cell we can say bacteria. Now there is a no multicellular organism or any animal or plant made up of prokaryotic cell. So prokaryotic cell only and only क्या होगी, unicellular organisms होंगे. But in case of eukaryotic इसमें unicellular भी हो सकते हैं. If you remember, the second pattern is protista, and multicellular भी हो सकते हैं, rest all plant and animals. ठीक है. So this is the difference between prokaryotic and eukaryotic
सेल। वी हैव डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल, वो हम बाद में करेंगे। सो वेरी फर्स्ट दैट मीन्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल।